Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nikita Gupta. I am welcoming you all in my first video of class 12th biology. In this video, we are going to study about the sexual reproduction in flowering plant. So student, before starting this particular topic, I would like to give you some information related to class 12th biology syllabus. As we know that in this year CBSE has reduced few chapters from your syllabus. अगर आपको पता नहीं है तो मैं उन chapters के नाम भी आपको बता देती हूँ. Suppose that this is very first video, we are starting from your reproduction unit, and that first chapter reproduction in organism has been removed from your syllabus. That means आपको जब आप क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो इस बार, तो आपको वो चैप्टर पढ़ना नहीं है. तो वी विल ऑल्सो स्टार्ट आवर प्रिपरेशन विद द सेकेंड चैप्टर. नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, आई वॉन्ट टू give this information to you all that sexual reproduction is a process in which two parents are involved, because I think in your junior classes you have already studied about the type of reproduction. What is reproduction? Reproduction is a process by which any organism continue its existence on earth. That means ये एक ऐसा biological process है जिसके थ्रू कोई भी organism अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करके रखता है, यानी अपनी स्पीशीज को बचा करके रखता है. और पहली चीज, जब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की, तो इट इज ऑफ टू टाइप, यानी रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके की होती है. द फर्स्ट वन इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अनदर वन इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ यू टॉक अबाउट द एसेक्सुअल वन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी वहां सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की प्रेजेंस में भी वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि हमारा बेस क्लियर हो चुका है, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो विद दिस चैप्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. Student, as you can see over there, I have written over there, these flowering plants are the member of angiosperm. Student, plant kingdom, if we talk about the plant kingdom has been classified into 5 different classes. The first one is your algae, the second one is your bryophyta, then pteridophyta, gymnosperm and the angiosperm. Angiosperm is such group of plant kingdom which is having some advanced character, and having a flower is also one of the advanced character. Because of the presence of flower, such group of plants will further develop fruits in them. अगर flowers नहीं होते तो ऐसे plants में fruit का development आपको देखने को नहीं मिलेगा. यानी अगर कोई group of plant fruits बना रहा है, इसका मतलब है कि there will be formation of flower. So when we talk about the sexual reproduction in case of angiosperm or in case of flowering plant, we have to first discuss the structure of flower. So we will continue our topic with the structure of flower. If we talk about the structure of flower, each flower is having basic 5 parts. हम लोग एक एक करके डायग्राम बनाते चले जाएंगे, एंड देन वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द पार्ट्स. मैं कोशिश करूंगी कि हर एक फ्लावर पार्ट को हम अलग अलग कलर से बनाएं ताकि हमें चीजें समझने में आसानी हो सके. एज यू कैन सी कि दिस इज अ कलरफुल पार्ट of the flower, and at the base we have green leafy structures present over there. Student, you can understand these are the sepals which will help to protect
the flower in its bud stage. Remember student, these green leafy structures are known as sepal, and they are also known as calyx. They are also known as calyx, and this is a वन. इसे ऐसा कहा जाता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर में टोटल 4 वर्ल्स होते हैं. तो यहाँ पे जो वर्ल 1 है वो आपका बना हुआ है सेपल्स का, जो कि ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है. एंड दिस विल हेल्प और गिव प्रोटेक्शन दिस फ्लावर इन इट्स बर्ड स्टेज, यानी जब वो कली की अवस्था में होगी तब ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. देन स्टूडेंट, यू कैन सी द कलरफुल पार्ट which will help in pollination process. As we know that in case of plants, pollination is very important, because without pollination there will be no transfer of gamete, and for that pollination we require agents, and for that agents they want some kind of rewards. जाहिर सी बात है, आज की दुनिया में बिना फायदे के कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा. तो सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे फ्लावर्स को देखें, फ्लावर्स के पास भी कुछ इस तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं या कुछ इस तरीके के अवॉइड पॉइंट्स होते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जिस दुकान में ज़्यादा चमक होती है हम उसी की तरफ जाना प्रीफर करते हैं. सेम उसी तरीके से जिस फ्लावर में ज़्यादा कलर होगी, जिस फ्लावर में ज़्यादा फ्रेगनेंस होगी, या जिस फ्लावर में ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स के फॉर्म में भी उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. तो देर आर कलरफुल मेंबर्स बाय विच द पॉलिनेटर्स आर अट्रैक्टिंग, और इवन हम भी अट्रैक्ट करते हैं. अगर कोई हमें भी ऑप्शन देगा, कोई एक नॉर्मल सा वाइट कलर का फ्लावर हो या एक रोज हो, तो हम लोग भी रोज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. वाई? क्योंकि रोज इज हैविंग वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव कलर, जबकि एक कलरलेस या एक वाइट कलर का जो फ्लावर है, कलरलेस नहीं पर वाइट कलर का जो एक फ्लावर है, उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे अनटिल अनलेस उसके पास स्मेल अच्छी ना हो. सो दिस इज द रीजन. तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज नोन एज द पेटल्स एंड इट इज नोन एज कोरोला. सो सी, दिस इज द सेकेंड वर्ल वी हैव, जो कि बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प करेगा. Now coming on the third part. If you talk about the third part is this third part is actually a male reproductive part. This third part is actually a male reproductive part, which is consist of two basic parts. This is male reproductive part, which is known as stamen. This is known as stamen, which is the male reproductive part. It is made up of two parts. Basically, this particular lobe-like structure is known as anther, and this filament by which this particular anther is attached to the basal part of this flower. So both the sides, these both things are common. This is the third part we have. The first one is sepal, green leafy structure, which will help flower in its bud stage or protect flower in its bud stage. The second one is your petal or corolla, which is the colorful attracting part, which will help in pollination process. The third is male reproductive part, which is known as your stamen, and it is consist of two basic parts. The one is the lobe inside, which is known as anther, inside which pollen grains are going to form, and the filament which is attached this anther to the basal part of this particular flower. Now coming on the third part. As you can see, this is the basal part of the ovary. We have drawn the fourth particular part, which is known as the female reproductive part.